Hello everyone. See, as I have mentioned in my yesterday's class, today I am going to share you an exercise. Okay, word exercise that you all need to do and submit to us. Word and word and English. Okay, I'll explain to you what it need to be done, and you all need to do and submit. Good morning to everyone. Good morning. See, this is English. You are able to see my screen, right? Everyone were able to see my screen, right? Yes, sir. No sound. Karthik, you are able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. अंजलि आप आपकी तरफ से एक बार चेक करिए ना. Karthik and others are able to hear me. Okay, this is the um, assignment sheet. In this assignment sheet, you have two pages. One page is English. Okay, in this, ma'am has given some details. Slash y slash make three sounds. Write 10 words in each sound and 30 words totally. Okay, this is about the English. And ma'am has given some 5 questions. You try to write answers for all these 5 questions. Okay, and second thing, if you get any doubts related to English, no, ma'am will join, right? You can directly ask to ma'am. Okay, as of now ma'am didn't join. Once ma'am joined, you can ask your doubts to madam. And coming to our MS Word, this is MS Word requirement. You need to make this particular document. See, you need to make this, like how you have maintained for hospital or car parking. Same way, you need to prepare this document, and in this document, this particular you take this in tabular form, and they I have given all the steps. See, it should contain a black border, 1.5 point around the invitation. देखिए यहाँ पे you have a black border with 1.5 points. Okay, and the background of the invitation. This is an invitation. The background of an invitation should be gray. देखिए यहाँ पे it is in gray color. Like that, whatever the points are there. And one more point. See, the heading should be in size 36. Size 36 and mono cursive font, and should be in blue. देखिए ये invitation, whatever is it is there, that should be in Monto Corsiva. ये Monto Corsiva आपको कहाँ मिलेगा? Where you will find this Monto Corsiva? यहाँ पे आपको Monto Corsiva M पे अगर आप गए तो देखिए मोनोटाइप मॉन्टो sorry, monotype Corsiva. देखिए monotype Corsiva. Your heading should be in monotype Corsiva, and size should be, this invitation size should be of 36, and invitation color should be in blue. Okay, that is first line. And next line, the computer society. You are able to see my screen, right? Everyone is able to see my screen, right?
Can you mention that in chat? See, next line after the heading, next is the Computer Society of the Faculty of Science. Okay, this particular heading. For this heading, what should be the size of that heading, and what should be the font, and what should be the color? Here they have mentioned like dull green. Okay, and in the same way, the Computer Society should be in the same font and color, but size should be of 20. See this, conducted by Computer Society. Then next line, the programming in .NET. See, whatever the programming in .NET, that should be of size 24 and Comic Sans MS, and it should be given in red color. The date and the time and venue should be in 14 of Arial font, and it should be italicized. Date, time, venue, all this should be of size 14 and Arial font रहना and italicized. And the rest of the document should be in size 12. ये सब जो भी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, ये जो भी लिखा था रिमेनिंग, इसमें जो भी है उसके अलावा रिमेनिंग जो भी है वो सब 12 में रहना चाहिए. देन नेक्स्ट, द th आफ्टर द डेट शुड बी सुपरस्क्रिप्टेड. यहाँ पे देखिए, डेट मंडे 27th, ये th जो भी है ना डेट के ये 27 के ऊपर आना चाहिए. ओके, द पिक्चर शोइंग द .NET शुड बी क्रिएटेड इन पेंट. देखिए ये .NET ये जो भी है ना, आप पेंट पे क्रिएट करके वो इमेज जो भी है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना वो. ओके, it should be inserted into document as a picture and should be sent behind the text. ये टेक्स्ट के बिहाइंड आ जाना चाहिए. वैसा पूरा मैं रिक्वायरमेंट दिया, हर एक लाइन का रिक्वायरमेंट दिया यहाँ पे. आप ये रिक्वायरमेंट पढ़ के उसके हिसाब से ये इनविटेशन बना के मेरे को शेयर कर लीजिए. Any doubts in this particular exercise? And this exercise you need to share to us in 2 days time. This English assignment and this MS Word का जो भी ये assignment है, right? This assignment you need to share in 2 days time. Okay, and you can even share to Karthik, or I will share my email ID. You can share there also. I will share both to mine and English to ma'am. Okay, any of the option you can choose, but whoever completed, no, they need to inform to us so that we'll get to know how many still are pending. In today's class, how many are there? In today's class, as of now, I could able to see 14. 14, 14 minus 1, 2, 3, 4. 14 minus 4. 14 minus 4. Totally 10 students are there in the class today. So all these 10 students, those who are absent and those who are actually attending our this particular program also need to attend this program. Sorry, also need to write this assignment and need to submit to us. So हम evaluate करके ये जो भी document आप submit किए थे, will evaluate myself and Sony ma'am. We will evaluate and give our inputs. जो भी inputs है, right, वो inputs आपको share करते हैं, and वैसा ही शिवा सर को भी share करते हैं.
क्या परफॉर्मेंस है, आप लोगों का किन किन का क्या क्या परफॉर्मेंस है. Okay, so take this take this assignment as serious, and do that. Those who don't this submit these assignments will be mentioned like not submitted. Attended the classes, not submitted. Okay, 2 दिन के बाद again अभी अभी ये आज तो थर्ड है राइट, सैटरडे संडे तक भी अगर आप कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट वीक वी विल कम अप विथ अनदर असाइनमेंट. वैसा हर वीक आपको 3-4 डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स रहेगा ये पूरा महीने. क्लासेस के साथ आपका असाइनमेंट भी रहेगा. आप टाइम निकाल के ये असाइनमेंट जो भी है वो कंप्लीट करके हमको सबमिट करने का. ओके. एज ऑफ नो. ओके ठीक है. एक बार सोनी मैम आने के बाद सोनी मैडम भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा व्हाट नीड टू बी डन ऑन दिस. ओके. नेक्स्ट आज का क्लास. कल हम कल हम सीआरएम का देखे थे राइट. आज हम सीआरएम के अंदर जाके देखेंगे ये सीआरएम कैसा हम. ओके ठीक है ठीक है. अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, इसमें सीआरएम का देख लीजिए. ये सीआरएम जोहो सीआरएम. ये एंटर कर रहे हैं हम सीआरएम मॉडल में. देखिए ये पूरा सेटअप करने के लिए ये पूछ रहा है. ये इनवाइट योर टीम जो भी है, ये इनवाइट योर टीम नहीं तो होम पे लीड्स. लीड्स पे देखिए ये क्रिएट ए लीड, इंपोर्ट लीड्स. देखिए लीड्स में अगर आप देखें तो ये सोशल मीडिया का देखिए लीड्स कहाँ कहाँ से आप मेंशन कर रहे हो. ईमेल, टेलीफोन, बिजनेस मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, एसएमएस. देखिए ईमेल. आपको कभी कभी ये ईमेल भी ईमेल का भी मैसेजेस आते ही रहते हैं. ये परचेस करो, वो परचेस करो. वैसा ईमेल का मैसेजेस रहते राइट. से ये ईमेल का. देन नेक्स्ट टेलीफोन का अगर कुछ करना है तो टेलीफोन रिलेटेड. देन नेक्स्ट पूरा इंफॉर्मेशन. नहीं तो बिजनेस मैसेजिंग, चैट. चैट करना है तो ये चैटिंग का ऑप्शन. ओके वैसा ही ये लीड्स का ऑप्शन देखिए. एक एक डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. देखिए पूरा पूरा लीड लीड नेम, कंपनी, ईमेल, फोन नंबर. वैसा आपको ये देखिए टच्ड रिकॉर्ड्स, अनटच्ड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक्शन, रिलेटेड रिकॉर्ड एक्शन, लॉग्ड एक्टिविटीज, कैंपेन. ये पूरा डिटेल्स देखिए. ये पूरा ये जो भी लीड्स है, ऑल द लीड्स, टच लीड्स. नो टच लीड्स. टच लीड्स बोले तो हम ऐसा ले सकते कि जिन लोगों को कॉल किया था उन लोगों का रिकॉर्ड्स जैसा. रिकॉर्ड एक्शन, आपने वो पर्टिकुलर लीड को कॉल किया था एंड उसके ऊपर क्या एक्शन लिया था. देखिए यहाँ पे मास ईमेल. ये मास ईमेल क्या है ना, एक ही बार हमको हमारे पास यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स है. ये 10 रिकॉर्ड्स के लिए हम मास ईमेल बोल के मेंशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो भी वो ईमेल का फंड, ईमेल जो भी रहते राइट, इन सब लोगों को एक ही टाइम पे चले जाएगा. नहीं तो मास अपडेट इसमें 10 लोग है. ये मास अपडेट
क्लिक किया तो सबको एक ही बार अपडेट हो जाएगा। ये ऐड टू कैंपेन, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। ये सीआरएम मॉडल जो भी है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स, देखिए ये पूरा कॉन्टैक्ट नंबर्स, किन किन लोगों को आपको कांटेक्ट करने का, वो कांटेक्ट डिटेल्स एंड अकाउंट डिटेल्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या क्या अकाउंट्स है उसका डिटेल्स एंड डील्स। देखिए क्या क्या डील्स है, डील्स का इंफॉर्मेशन है। ये टास्क, टास्क बोले तो हर एक हर एक सीआरएम का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता, बट दिस इज अ बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए सीआरएम गेटिंग स्टार्टेड, ड्यू डेट, कंप्लीट स्टेटस। यहाँ पे हम व्हाट इज अ टास्क, एक टास्क क्रिएट करेंगे। देखिए क्रिएट ए टास्क, टास्क ओनर, न्यू टास्क, ड्यू डेट। यहाँ पे ड्यू डेट हम अगर एट, एट इज ड्यू डेट। कांटेक्ट लीड, लीड का कांटेक्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा कांटेक्ट, नहीं तो न्यू लीड, अगर न्यू लीड है तो वो लीड का नंबर्स, नंबर और कंपनी का डिटेल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। एज ऑफ नो जो भी यहाँ पे है मैं ये मेंशन कर लेता हूँ। ओके, बट डेट देखिए एट डेट है एंड स्टेटस नॉट एट स्टार्टेड। ओके, नॉट एट, नॉट स्टार्टेड, नहीं तो वेटिंग फॉर इनपुट, वेटिंग फॉर इनपुट बोल देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे प्रायोरिटी हाई लो, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इश्यू। वो इश्यू, वो जो भी टास्क आपने लिखा था, वो टास्क, वो टास्क का इम्पोर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो टास्क लेस इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। हाई हाईएस्ट, लो लोएस्ट, नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ठीक है। एंड ये रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको कब अगेन रिमाइंड करने का, ये टास्क का कब रिमाइंड करने का। मेरे को अगर ये टास्क सेवन, सिक्स्थ को नहीं तो फिफ्थ को रिमाइंड करना चाहिए बोले तो फिफ्थ को वो रिमाइंड करेगा। रिमाइंडर टाइप देखिए रिमाइंडर टाइप डेली, नोटिफाई, नोटिफाई पॉपअप ईमेल। नोटिफाई पॉपअप ईमेल बोले तो आपको रिमाइंडर ईमेल में आएगा, नहीं तो स्क्रीन पे पॉपअप पे आ जाएगा। ओके एंड डन। सेव, ये सब्जेक्ट आई विल मेंशन मीटिंग। ओके, अभी सेव, अभी ये सेव किए तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे वो पर्टिकुलर टिकट हमने कौन सा टिकट टास्क रेस किया, वो टास्क का डिटेल्स आएगा। यहाँ पे वो टास्क का डिटेल्स, नॉर्मल, वेटिंग, द नेक्स्ट टास्क, रिलेटेड टू टास्क, ये सब, ये टास्क का कंप्लीट होने के बाद ये पूरा डिटेल्स जो भी है ना, यहाँ पे हम नोट्स जो भी है वो सब लिखते हैं। वो सब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो सब लिखते हैं। उसके बाद हम ये क्लोज टास्क कर लेते हैं। एक बार ये टास्क कंप्लीट होने के बाद ये टास्क को हम क्लोज कर देते हैं। एंड अभी आप एक बार ये क्लिक किए तो देखिए ड्यू डेट इज 8, अभी मैंने ये टास्क क्रिएट किया। सो ड्यू डेट 8 को है, वेटिंग फॉर इनपुट्स, एंड उसके अंदर गए तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। ये रिमाइंडर शेयर करेगा आपको, ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट टास्क एंड ये सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करते हम। देखिए यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, लॉन केयर, प्लम्बिंग, अप्लायंस रिपेयर, इलेक्ट्रिकल वर्क, इंस्टॉलेशन, सैलून सर्विस, ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपको कुछ नया सर्विस स्टार्ट करना है,
आप नया सर्विस भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सर्विस का नाम ऐड कर लीजिए यहाँ पे। एनेबल सर्विस, कॉन्फ़िगर बिजनेस आवर्स। ये अभी तक ये कुछ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, राइट, इसीलिए वो एनेबल नहीं हुआ। बिजनेस आवर्स, कंपनी सेटिंग्स, ये यूजर्स, न्यू बिजनेस आवर्स, 24 आवर्स। देखिए यहाँ पे मेरा बिजनेस आवर्स क्या है, 24 आवर्स 7 into 5, और 24 आवर्स 5 डेज। 5 डेज बोले तो मंडे टू सैटरडे, नहीं तो ये कस्टम का। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कस्टम ही रहता। सेम आवर्स एवरी डे। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, 10 AM से लेके मेरा ऑफिस आवर्स 10 AM से 8 PM लिख देता हूँ। सो इन बिटवीन दिस टाइम्स आई विल बी अवेलेबल बोल के ऑन ऑल दिस डेज, बिकॉज मैंने 5 डेज लिखा यहाँ पे। अगर आपको ऑल 7 डेज देना है तो आप 7 डेज दे सकते हैं। डिफरेंट आवर्स, देखिए, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट आवर्स देना चाहे तो मेरे को मंडे टू, यहाँ पे मंडे टू सैटरडे तक, लेटेस्ट टेक ये 6:30 तक का। ओके, यहाँ पे भी 6:30 तक, यहाँ पे 6:30, 9 AM से 6:30, यहाँ पे भी 6:30, एंड यहाँ पे भी सैटरडे तक 6:30, एंड संडे हाफ डे है। सो मैं सिर्फ आई विल वर्क ओनली टिल 1:30 PM, सो 1:30 PM। सो आप यू हैव set your business hours, and if you are having any shift hours, you can mention the shift hours. What are the shift hours? ये CRM मेंशन करने का। US शिफ्ट, नहीं तो इंडिया शिफ्ट। इफ यू आर हैविंग मल्टीपल शिफ्ट्स, यू कैन मेंशन दी मल्टीपल शिफ्ट्स। मल्टीपल शिफ्ट्स मेंशन करके उसमें, उसके बाद यू कैन ऐड द ऐड यूजर्स who all are coming in that particular group. If some people are working for morning shift, I'll mention those people in the morning shift, and if at all anyone is working in the afternoon shift, I'll mention afternoon shift. See, morning shift, I'll mention morning shift. In that morning shift, I'll make this as it is only giving up to. This is only considering from 9. I'll mention otherwise general shift. General shift 9:30 to 6:30. I have saved this. देखिए बिजनेस आवर्स क्रिएट किया मैंने, एंड आई हैव क्रिएटेड द जनरल शिफ्ट आवर्स आल्सो। Monday to Saturday 9:30 to 6:30, Sunday 9:30 to 1:30. Otherwise, if I want to create any other shifts, I can even create another shift. I'll try to make this as 12:30 PM to, what is this, 9 AM. Okay, only one shift, because I have mentioned my shift timings are, my office timings are from 9:30 to 6:30. It is not allowing me to make the other shifts. Now these are the shift hours. Same way, if you want to mention fiscal year, okay, you can mention fiscal year begins in January, but in India it will actually begins from April.
Okay, starting of the year is April. Starting of the year is April. So I have mentioned my fiscal year as April. फिजिकल ईयर बोले तो व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर. हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल, सो दिस इज अनदर ऑप्शन. आफ्टर दैट, business hours, holidays. You can declare the holiday list over here in the CRM itself. In the CRM, each and everything you can create on your own in the beginning. Select 2024. In 2024, what is the holidays? Holiday name. I'll mention. Do you guys will have Ugadi? Ugadi. What you call Ugadi in Hindi? Now we are having some Ugadi festival on April 9th. So I'll mention April 9th, one holiday on April 9th. I am trying to create another festival called Tamil Tamil New Year. Tamil New Year. So we are having April 14th as Tamil New Year. Anyhow, that is Sunday, but still I am mentioning that as another. And one more holiday. One more holiday, business holiday or all general shift holiday. Okay, I'll mention one more holiday as January 1st, New Year holiday. So like this, I can mention each and every holiday list over here. So see here, company details. In the beginning, I have mentioned the company details and what is the Zoho link. उसके बाद what is the domain. If I am having any website related stuff, what is the domain? The next is fiscal year. What is a financial year? I have mentioned like it is from April. Then next, business hours. From Monday to Saturday, it is 9:30 to 6:30, and Sunday it is 9 a.m. to 1:30 p.m. So these are business hours. And holidays. These are the holidays which we have declared in our CRM. Then currency. If you take the currency, which currency? See here. Do you want to set US dollar? No, we don't want US dollar. I want to change home currency. What is the home currency for us here? IN, rupee. Rupee is there, right? देखिए, see, Indian rupee. So for this symbol is this decimal. If you want to have a decimal, you can go with the decimal. Now see, this is my currency details. So I have done all this calendar, all the company details. Now users, if I want to create any users, those who want to use this particular CRM, users can be all the employees who are working in this particular CRM model or the company. Okay, company settings I have done. Calendar bookings. If I want to make any calendar bookings, I can make calendar bookings. What this calendar bookings is and where it will be helpful is sometimes you will not be knowing with whom you are having meetings. So in this calendar bookings, what I'll do is I will book a particular time, name, email, and the participant details, and what is the meeting duration, how much time, 15 minutes or 1 hour, and on which date. On which date, show the availability and on which date. And rolling days means whether you want to have this meeting on daily basis for next 60 days or how you want. Those details you can mention over here. Show availability in increment.
Means in this calendar, it need to show the availability. Accordingly, you can book a calendar with that particular person on that particular day. हम कहीं पे भी किसी से भी मिलना चाहे तो हम एक कैलेंडर नहीं तो एक नोटिफिकेशन जैसा मेंटेन करते रहे, ओके इस समय को इसके साथ हमारा मीटिंग है, एट at this time we are having a meeting with this person. So same thing here, we are maintaining add questions if you want to have any questions. This will be helpful when you know the agenda of the meeting. यहाँ पे in this add question, if you add all those information, the opposite person to whom you send mail, he will also be knowing, okay, for what you are actually coming. Advanced gamification. It is time to have a fun when you get done. This is not okay. The next, security controller. Roles and responsibilities. Who is what, at what levels. The next, profiles. Who are the employees and what are their profiles. वो सब details यहाँ पे you can add the profile. The next, territory management. In which locations you are having and you are going to have. Okay, what is the domain you are going to use? What is the login history? Login history means at what time you have actually logged in. You or anyone who is using this particular website have has used this particular, seen this dashboard. How many times I have used this? What are the websites that I have gone through? What is this application about? Everything you will have in this particular. Who is the admin and who are the users, and how many groups are there in this. Everything is maintained in this. बोले तो ये सीआरएम बोले तो पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पे, आपका कंपनी का डिटेल्स, आप किन किन लोगों से मीट करना चाहते हो, कब किन से मीट किया, एंड व्हाट इज आउटकम ऑफ दिस, सब इसमें आपको आपको आ जाएगा. यूजर होम. अगेन आई एम कमिंग बैक टू द यूजर होम. देखिए यहाँ पे, देखिए कॉन्टेक्ट्स, आपका कॉन्टेक्ट्स क्या है, आपका चैनल्स चैनल्स क्या क्या है, देन नेक्स्ट आप किस किस से चैट किया था. All the details you will be getting over here. Okay, this is completely about the CRM. CRM. ओके, समझ में आया आप लोगों को? सो कल कल का क्लास में ये जो भी CRM आप लोगों को मैं और एक बार शेयर कर लेता हूँ आप लोगों को. ये पर्टिकुलर इसमें आप आपका ईमेल आईडी से आप लोग, as of now I am signing out of this. ओके, आई एम साइनिंग आउट ऑफ दिस. एंड इसमें आप ये पर्टिकुलर यूआरएल आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे. ये पर्टिकुलर यूआरएल से आप अंदर जाके आपका डिटेल्स फिल करके, आपका जीमेल आईडी जो भी है, जोहो सीआरएम रिपीट सारा. रिपीट अन्ना, फ्रॉम वेयर यू वांट मी टू रिपीट, फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम मिडिल? ऐसा थोड़ी होता है. ये मूवी के बीच में आके यू स्टार्ट मीन्स फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट.
ये सिंगल लाइन से नहीं हो जाएगा, राइट? व्हाट इज योर डाउट? आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर where you got stuck, what is your doubt. Agar if you ask to that particular question, I can answer that. Sir, Zoho CRM, repeat, sir. आपको चाहे तो कल कल again in tomorrow's class, see whatever I have shown in this using Zoho Access, again I will try to repeat the same concept tomorrow. But please use this particular website zoho.com and login.html, and you try to log in, you try to sign in over here. देखिए ये साइन इन करके अंदर जाने के बाद, ये साइन इन कर रहा हूं मैं, साइन इन करके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक CRM बोल के एक ऑप्शन रहेगा। आप वो CRM को क्लिक कर दीजिए। CRM क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आएगा। ये देखिए बहुत ऑप्शंस आएगा, लीड्स, कांटेक्ट, अकाउंट्स, डील्स, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएगा। आप एक ऑप्शन, आप एक ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लीजिए। अगर कहीं बीच में आप स्टक हो गया तो जस्ट लेट मी नो, अगेन आई विल रिपीट tomorrow's class. I am going to repeat again one more time the same CRM. Okay, and one more, just a minute. Yeah, Sony ma'am also came. Ma'am, man, can you unmute yourself for a minute? Sony ma'am. Yeah. Tell me, sir. Yes, Yeah. yes, ma'am. Ma'am, I have explained about my whatever the document that I am going to give as an assignment, and this is what you have shared. You want to explain to them anything? Otherwise, these 2 pages, whatever is there, I am going to share to Karthik, Yeah, and I you can, can right? let them read it. No point in explaining. They should know the know to read in English. So let them do it. If they have any doubts, they can ask in the group. Okay. Okay, ma'am. Okay, if that Okay. is the case, okay, if that is the case, so I have explained my scenario, and I have given them time till Saturday, ma'am. Yeah. Okay, I have given time till Saturday, and here today around 14 are there. All the 14 or whoever are participating in this RWE program, everyone need to submit, and this report will be. We can forward this in the group, sir. We can Yeah. send it to Srinath as a PDF. We can forward this in the group, and whoever not attended the class today also can participate. Like. Yes. Now I am going to share this to Karthik himself. He will post in the group, main All group. right, sir. Okay, sir. Okay. Okay, ma'am. Then I will share this in PDF format, ma'am. Then. Thank you, sir. Okay, ma'am. Thank you. You can continue your class.